Okay, hi everyone. So today let's discuss this problem. So in an inelastic collision, the initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. No, there will be some loss of kinetic energy in inelastic collision, right? So K final will be lesser than K initial. So option A is wrong. The final kinetic energy is less than the initial kinetic energy. Of course, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी लेसर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी का, और कितना लॉस होता है के फाइन, you can write it k initial minus k final, that is equal to half of m1 m2 upon m1 plus m2 into u relative का square into 1 minus e square, right? The kinetic energy remains the constant. नहीं, kinetic energy will not be constant, right? collision के टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट? एनीवे, और लॉस भी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट रिमेन कांस्टेंट. द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट इंक्रीज, राइट? कैसे इंक्रीज कर सकती है? जब तक आप कोई बाहर से वर्क नहीं कर रहे सिस्टम पे, सो काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट इंक्रीज. सो एनीवे, ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग. सो आई थिंक इट्स क्लियर. लेट मी नो इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन हियर. It's simple, right? Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.